Also, so climate change and environmental litigation done. Yes, sir, already done. मैं तो जी आप कुछ पाया तो स्कोप नहीं। हाँ सर, हमें को से दियो, आगे दियो। तो हमें लैंडस्लाइड कॉम्प्लेक्स लाइट सब बढ़ी चलती देखते नेचुरल डिजास्टर सब बढ़ी चलती और व्यू का वे कथा जो आलोचना करछे इट इज इन and women children and all are the worst suffers काइना क्लाइमेट चेंज प्रभाव एमान को ऊपर अधिक पड़ुची पीपल्स मूवमेंट विश्व स्तर रे बहुत बड़े मूवमेंट वर्तमान चलछि विभिन्न जगह रे से विषय रे लिखा जाय छे खास होती फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट जो जे आलोचना करथले बेटा फंबर से शुक्रवार दिन हेले स्कूल रो गेट पाखे बसी के रहे क्लास को जाय नहीं सेठी रही आंदोलन आरंभ कला ये तब माने मोर भविष्य को नष्ट कर दोछो जो सरकार में अछंती प्रशासन में अछंती सेमान को से प्रश्न कला मो भविष्य को नष्ट करिया पई तब मान को अधिकार दिए देला से जो आंदोलन आरंभ करतला ता नाम ला फ्राइडेज फॉर फ्यूचर शुक्रवार दिन गेट पाखे बसी अन्य पिला माने जाय करे आस्ते आस्ते विश्व स्तर रे गोटे विराट मूवमेंट हला एक्सटिंक्शन मिलेनियम जो जीव जाति माने विलुप्त हो जाउछंती ताको रक्षा करिया पई आउटे यूके रे गोटे ऑर्गेनाइजेशन का टाइम हो जे एक्सटिंक्शन मिलेनियम समान मत काम करछंती किंतु वर्तमान कोन घटुछि बिजनेस एज यूजुअल केते आलोचना पर्यालोचना जाति अनुकूल रे हेमध्य परिवर्तन विशेष किछि घटु नाही बिजनेस एज यूजुअल इज गिविंग अस किछि लोक आंदोलन रे शामिल अछन द सनराइज मूवमेंट अमेरिका आउटे आंदोलन का नाम होछि सनराइज मूवमेंट जो माने कि सरकार द्वारा पॉलिसी को अपोज करछन्ती विरोध करछन्ती एवं कहछन्ती रिन्यूएबल एनर्जी अधिक व्यवहार करा जाउ सोशल जस्टिस दिया जाउ क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट विश्व सारा बहुत एनजीओ ए प्रोसेस रे शामिल हेछन्ती क्लाइमेट जस्टिस विशेष भाव रे समाज रे तला तक रे जो मन रहिछन्ती गरीब श्रेणी लोक अछन्ती सेमान को विशेष प्रभाव होछि अल्प दिन तळे कोटा आर्टिकल समाज रे लिखिली टाइटल थिला जलवायु न्याय लोक मान को केवल न्याय प्रदान करा दियो सेति पई सरकार कार्यक्रम ग्रहण करथु भागवत रिजर्वेशन एटा जाति संघ रे पारित होला ए जो चित्र रे हम देखु जे भागवत गोटे छोट आइलैंड पैसिफिक ओशन रे रहि छे जे के आस्ते आस्ते बुडी बुडी जाउछि समुद्र पतन बढ़ुछि मात्र 3 मीटर उच्च रे अवस्थित ए भागवत आइलैंड से आउ किछि वर्ष ପରେ समुद्र लीन हेजो बुडी जीव ताकू रक्षा करबा पई जाति संघ रे जो रिजर्वेशन पास हला तार अनुकूल रे 130 देश ताकू सहयोग कले एवं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्तमान ता पर विचार करतोती सब देशर राष्ट्र मुख्य मानक निर्देश आसो आपण निजे राष्ट्र को सुरक्षित रखतु जलवायु परिवर्तन रु सो क्लाइमेट चेंज इज अबाउट द पीपल ये सरकार का राजनीतिज्ञ एमान के ऊपर विशेष प्रभाव पड़िबो नाही किंतु साधारण लोक द पीपल it is about the people who are being impacted right now दोनों विशेष भाव रे प्रभावित होचंती इंडिजिनस लीडर्स बहुत जगह रे जनजाति आदिवासी ग्रुप माने अमेरिका उदाहरण देखा जाय कि स्टार्टिंग ग्राफ शोस ये सेमाने के लिए कोई प्रोजेक्ट को आंदोलन माध्यम रे बंद कर देले सेमाने कहले आप द्वारा जलवायु परिवर्तन अधिक हबो सेना को बंद कर देला एनवायरमेंटल जस्टिस मूवमेंट एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल विभिन्न स्थान रे विश्व सारा आगे आंदोलन चाली छी एनवायरमेंटल जस्टिस रखो ने बड़ा प्रदूषण नियंत्रण करा दिबो मार्च फॉर क्लाइमेट रो सुरक्षा पाई हमें सम्मिलित भाव रे विभिन्न जागा रे एभली कार्यक्रम ग्रहण करबा विशेष भाव रे यूथ पॉलिसी एडवोकेसी जो आईन कानून पॉलिसी करा जाउची सेतिरे क्लाइमेट चेंज को किबोली हमें प्रतिहत करबा सेना इंक्लूड करा दिबो पेरिस एग्रीमेंट में जो लक्ष्य रखा जाइतला 1.5 डिग्री सेल्सियस रे तापमात्रा वृद्धि को सीमित रखिबा संभव हो नै वर्तमान ए वर्ष 24 मसिया सबठु उत्तप्त वर्ष थिला 1.55 डिग्री सेल्सियस अतिक्रम करि सारलाई
आगो को कौन हबो चिंता करबार विषय काहे ए शताब्दी शेष को एटलीस्ट 3 डिग्री बढ़ी दिबो तो पेरिस एग्रीमेंट जो निष्पत्ति ग्रहण करा गला से नॉट अचीवेबल ग्रासरूट मूवमेंट एगा हम चिपको मूवमेंट इंडिया उदाहरण दे गई से छत्तीसगढ़ रे महिला मान को गोटे आंदोलन देखा जाई आ गोटे आंदोलन 350.org 350 कार्बन डाइऑक्साइड रहिबा कथा 425 हे सारलानी तो हमर 350 रखिया पाए क्लाइमेट रिफ्यूज एंड माइग्रेशन बहुत लोग वर्तमान माइग्रेशन प्रॉब्लम भोगुछंती समुद्र उपकूल ताको छाड़िया पड़छि गोपालपुर रे हम माने निजे सोचत देखि पारे बहुत इंटरनेशनल लॉ फ्रेम करा जाउछि किंतु ताको ठीक भाव रे लागू करा जाउ नाही सो डिक्लेयरिंग क्लाइमेट इमरजेंसी सब जगह रे जो अधिक प्रभाव पड़छि सेठी इमरजेंसी डिक्लेयर करा जीवो एवं अन्य मूवमेंट सहित क्लाइमेट मूवमेंट मध्य जोड़ा जीवो एमाने नोबेल प्राइज पाइछंती जेटा आपण माने देखुछंती सरी लेसन्स लास्ट लाइन लेसन्स फॉर द फ्यूचर वर्तमान 13 डिग्री अतिक्रम कर सारलेनी 40 रु 50 मसिया भितर 2 डिग्री अतिक्रम करिजिबा तापरे आपण माने किभଳି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଷୟ so there is no planet please save our planet ये समस्त स्लोगन आज दिन में होगा था बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी Let's have a difference. तम जीवन रे किछि गोटे नुवा जिंस कर भलो बुद्धि सृष्टि कर प्रकृति परिवेश संपूर्ण भाव सुरक्षित समस्त हसी जीवन यापन करबा ए दायित्व तम थैंक यू सो मच There are so many people told me, and 6 in 1 man. I want to start with an apology and voice, largely because of climate change. So, the previous speaker talked about California. I talked about Native Americans. It so happens that this is my 52nd year in California, and I'm a student of Native Americans. So I want to just give you some examples of what I have observed over a period of time. So, California was part of Mexico until 1848. It came under American control in 1848. In 1849, gold was discovered not very far from California, and as a result, people from 90 different countries started to come to California in search of their future. In 1900, there were 1 million people in California. By 2000, there were 34 million people in California. Now there are about 40 million people in California. There are more than 2,000 billionaires in the world. 200 of them live in California. Many of them lost their houses in the forest fire, both in Southern California as well as in Northern California. To a large extent, we human beings are responsible for climate change. We have become so homocentric and anthropocentric that we have sacrificed other forms of life which were integral to nature, and because of that there was a kind of balance in nature. So to a large extent, if at all we are serious about climate change, we have to change ourselves. If we are unable to do it, then only the divine can help us. There are 2 things I wanted to say. One is that I'm very happy to be here to hear the luminaries who are on the stage as well as sitting in the audience. And I also want to pay my respect to Professor Mohanty and his wife, because they have done something absolutely remarkable. Both my wife and Punaji and I great admirers of the Darshan Chakra. I'm a Bhojpuri speaker from Eastern Uttar Pradesh, and I know Sanskrit, so I understand everything which
which is spoken in Odia, but unfortunately I can't speak in it. The thing I want to say is that I am a field-oriented anthropologist. That means that I rely on the knowledge which I have collected by being in the field. My field has been native peoples of North America for the last 60 years. In particular, 3 of them, Hopi, Navajo, and Zuni of the American Southwest. I spent about 5 years with them, and I have represented them in the US Congress, in various federal courts, in various commissions where they want to express their voice, the kind of things which are happening in America. Whenever the ecologists or the environmentalists or the do-gooders want to go to them to seek their wisdom, they tell that you have destroyed yourself. You have made every effort to destroy us. Somehow we have survived, and we want our wisdom. You don't care for our wisdom. But the point I want to make is that unless and until we rely on things which have worked for us so far, things are not going to change much. I'm here to learn about what is happening in this side. I'm not here to pontificate about anything. But the thing I wanted to say is, I'm a great admirer of a philosopher, George Santayana. Just 5 days before he died, at age 89, his disciple and secretary came to him and said, Professor, is there anything you want to say before it is too late? And I responded, just one thing. Remember, we live in 2 worlds. We live in 2 worlds. One, we create in our poetry, in what we write, and the other out there, nature, environment. These are 2 separate worlds. One we live in, the other out there, open to study and scientific observation. They are separate, but they are interdependent, they are interconnected. This is what we human beings have forgotten. Why we have forgotten? This is what Cartesian binary between culture and nature. And this is part of the Cartesian binary between culture, the domain of us human beings, and nature out there was overlooked. It created a hierarchy between culture and nature, putting culture superior to nature, and exploiting the natural resources in order to magnify the glory of us human beings. If you think of it, there are several scientists in the audience. This universe has been around for 14.6 billion years. This earth has been around for 4.4 billion years. India, the land in India is about 1 billion years old also. There are multiple forms of life which have been here before we human beings came in order to progress, in order to become what we have become. We have sacrificed every form of life. We have sacrificed every form of life. We have tried to nullify diversity of every kind, language diversity, cultural diversity, biodiversity, and without diversity, we are going to be so dull people that even our own life will become unbearable to us as it is increasingly becoming. There was a wonderful historian teaching at one of my sister campuses, University of California, Los Angeles, and he wrote a wonderful book in Scientific American in 1975, in which he said that Christian cosmology is responsible for climate change, is responsible for what is happening,
Those of you who are familiar with the origin story of the Bible know that the God created Adam, the man. Then Adam, the man, was not satisfied. Then he created another father of life, Eve, from the left side of the body. Still he was not satisfied. So God created all kinds of plants, animals, vegetables, and they were treated as the minion of Adam, the man, for his entertainment, to sustain him, to amuse him. And this is what has been going on for God knows how many centuries and how many decades. So if at all we are serious about any kind of change, as I said earlier, we have to change ourselves. It so happens that Professor Manthi and I were students in America in 1960s. He was at Berhampur, I was at Chicago, and all kinds of social movements were starting during that period. Free speech movement at Berkeley, civil rights movement in every part of America, but in particular in the southern part of America. The women's movement started in 1970s. So the world in which we are now is very different from the world in which I entered some 85 years ago. So what I may say is that if we are worried about the consequences of climate change, climate is changing, it is changing everywhere. Scientists are telling us that it is going to get worse. What Professor Panikar talked about it earlier, we are going to hear from other people as well. So how are we really going to change it? So many of the people in America are going to hope is union. As I said earlier, I have been their student since 1964. And what they tell me, luckily the people we call tribal in India and in the United States escaped from some of the bad consequences in industrialization due to their forests, mountains, reservations. I have spent more than 60 years of my life studying them, teaching about them, and what I have learned from them is very simple. These tribes are not displaced, and they have occupied their aboriginal home grounds for thousands of years. The Zuni people for 8,000 years, the Hopi for more than 1,000 years, the Navajos for about 500 to 600 years or so. And what they say is they all consider the land their church, their holy ground, and they also endow their rivers, their forests, their mountains with a halo of sacredness, with a halo of sanctity in order to preserve them. They consider other forms of life, birds, animals, insects, plants, their relatives. So the thing to learn from them that they consider as a key, they address all the forms of life, whether they are animals, or whether they are mountains, or whether they are rivers, as if they are related to them. So, unlike the taxonomic way of looking at these things and putting them in different pigeonholes and categories, they consider them their relatives, and as a result they care. And that caring has really made them survive for a very long period of time, despite every attempt has been made to annihilate them. These people in their dances, in their songs, in their folk tales, in their myths, in their legends, in their rituals, include every form of life. If you see, you have to see a film which Apollinachi made, wrote to Zuni, based on the Zuni life. You can see their ritual dances. Every form of life is included in their representation, in the way they represent themselves. So I remember my teacher, Professor Egan, and I were visiting the Hopis in 1983. One of the Hopi elders was listening to a tape, and the tape was saying that the Hopi Kachinas, their word for gods,
we are saying that look at us, the divine beings, and look at yourself. See how much you have changed and how we have remained the same. Look at yourself and look at us. See how much you have changed and how we have remained the same. So to a large extent, change is inevitable. Change is part of life. We are not going to get away from it. That we should change in the way which is compatible to living in a harmonious way with nature as well as with culture. Medical ideology or Western ideology in general is growth oriented. But there is a limit to growth. Can you please? There is a limit to growth. Unless and until we start changing our consciousness, changing our mindset, not much is going to happen. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for being so eloquent and subtle. I am sure it must have given a job, especially to the young minds and scholars, to theorize in social sciences on this great question of climate change. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କିତ ହିଁ ରହିବ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦୁଇଟି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରିବେଶ ଯୋଦ୍ଧା ମୋର ବନ୍ଧୁ सभापति महाशय, मंचस्थ समस्त आलोचक आज गवेषणा चक्र विदिन अधिवेशन में समस्त अध्यापक अध्यापिका गवेषक छात्र छात्री सामाजिक साथी मान समस्त धन्यवाद दूची पुणी मु वर्तमान मत कहना सुযোগ ଦେଇଛି। साधारणतः मो व्यक्ति मानकर ओपन सेशन थाए द्वितीय शेष दिन बेले मझे गोटाए आलोचना खोला आलोचना बेले कि समय मिलता है, किंतु जेहेतु मो केवल आज दिन रही पुणी डाकरा आसी जो कथा आपण मान आज रखी परिवेश जलवायु परिवर्तन सहित भविष्य और सहित तेणु ए सद्य पश्चिम ओडिशा सबुठ बड़ जलवायु परिवर्तन को आगे आगू नापी जो संकट सृष्टि गणमार्दन से गणमार्दन बचाइवा जो आंदोलन चलती आसंता काली एक महा समावेश अच्छी से जोगदेव हम जेतु तारीख बदली गला तेणु मत निश्चित भाव मुझे सुजोग पारि ना तेणु आज जी कहवा कथा जो समय देती से समय केवल 3 मिनिट मागुची 15 मिनट्स 13-12 मिनट मत सूचना देते अधिक जदि तार आगु सरीगला मुझे कहबी ये दिज जन आंदोलन संग्रामी साथी अच्छा आम सहित जो मैंने मिसिक सब कम करूँ लोक सहित सी होती
विजय द्विवेदी विजय उपाध्याय एवं लिंगराज आजाद तेणु से ओडिशा जनआंदोलन परिप्रेक्षी अधिका कथा कहे मुझे खूब चुंबक भाव में मो वक्तव्य दुई भाग करने चाहे प्रथम तो कह कोई भाव जो पृथ्वी तो आरंभ करके देश आम देश ओडिशा जो आंदोलन गुड़िक हो नदी को बचेवा जंगल को बचेवा उपकूल परिवेश को बचेवा आम कहूँ कोस्टल इकोनॉमी से आंदोलन विशेष भाव में साधारण मनुष्य माटीर मनुष्य में से होती आदिवासी दलित चाषी तो मार्जिनल फॉर्मुला से आंदोलन एवं आमे विषय छात्र छात्री गवेषक जो अनेक जो मैंने यूनिवर्सिटी अच्छी कॉलेज अच्छी पढ़ाऊँ कि पॉलिसी मेकिंग रे भाग नौ सरकार पाखे किसी अच्छी कहवाई अनेक लोग आम बंधु मैंने आम जो भी इंटेलेक्चुअल कहूँ पाठ किंतु मत देवारे आग को आस आम जो कथा मु जो कथा कही हूँ से बढ़िया एक्सप्लेन कर पारती कि क्लास रूम गले भिन्न मत देकी कहे जे आमको सब कथा बुझे किंतु आज दिन में we have climate change emergence एथिरे कंसिडरेशन विचार करेगा समय नहीं जदि आमे पृथ्वी हजार हजार साइंटिस्ट माने जो समीक्षा करछंती आईपीसीसी रिपोर्ट तैयारी करछंती जाति संघर फोरम रे से मानक यदि आमे ग्रहण करवा स्वीकार करवा विश्वास करवा विज्ञान को बिना विज्ञान रे आमे मत देवटा भी ठीक नुह जे तांको ग्रहण करवा से दृष्टि मु कहबी जे आमे ग्लोबल वार्मिंग कथा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कथा से चेंज तो आम आखिर रखिले पूरे खाद्य हासिल करने को असमान विशेष आर्थिक असमानता इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एवं दीटा जाकर वो ये दीटा जाकर दीटा पॉइंट देखिबो तब की तैयार करछि पॉइंट रिजर्व करनी पैसा तैयार कर किंतु राष्ट्र पृथ्वी जो सिस्टम वर्तमान अच्छी दैट इज ग्लोबल कैपिटलिज्म तब वर्ल्ड मार्केट को ग्लोबल मार्केट को विश्व पूंजी जहाँ भी कहतु से एक सिस्टम वर्तमान से सिस्टम व्यवस्था यूनिपोलर ही पृथ्वी एवं आज हम जो आलोचना करछु से सिस्टम को हमें कोई और देखियो जे तो तार अल्टरनेटिव कोन भविष्य जब जमान को पचरछंती तार अल्टरनेटिव आउट भविष्य जब हम अल्टरनेटिव कथा ठीक कर परी ता दिगत आगे तार भविष्य पाई हम किछि ध्यान तो इंटर सिस्टम के दीटा संपर्क करी अछि और दीटा संपर्क परिपूर्ण हम तेरे बर्तमान ग्लोबल कैपिटल कौन फुट एकोनॉमिक्स ऑफ कैपिटल पृथ्वी रे जते प्राकृतिक संपद अछि थर्ड वर्ल्ड रे अछि डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री अछि एवं उत्तर नॉर्थ
बेसी धनी विकसित राष्ट्र को आओ से माने निर्धारण करते पुंजी को ए व्यवस्था तो हमें हाउ टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट जस्टिस अनलेस यू अंडरस्टैंड द सिस्टम तेणु मोर आपण मान पिला मान को आमे जो माने अच्छु आमे प्रथमे ताकू लोक की व्यवस्था की कोबड़ी भाव तैयारी को जाएंगे ना जो थी वर्तमान आपण देखिए डेवलपमेंट जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी केते बढ़िबो एवं अंबानी आदानी मिसई करे तमाम भागरे पड़ जाउछ में हमर सब इनकम इट्स अ फेक डेवलपमेंट Also, India had accessibility against its constitutional direction. संविधानिक व्यवस्था का निर्देश विरुद्ध भारत सरकार माने हमें प्रतिदिन प्रकृति पूरा आक्रमण हमें जंगल खत्म करछु खनि खत्म करछु बहुत विकास पाए so now can we have debate can we appeal to the politicians political parties of India एवं ओडिशा जे केते तमे सारिबो केते की सारिबो विकास ना दिनेश बतियो आपण मान आमे जतो बळे आदिवासी मान जतो बळे की चासी जतो बळे कोजी मो जमीन हो न मो जंगल खत्म करनो से तो बळे आपण तो डिबेट कर कहू हम जो विकास करियो से विकास में केति दरकार को विकास करियो आपने बात परिभाषा विकास और परिभाषा में परिवर्तन करियो को जो सिस्टम तो बढियो को तो डेवलपमेंट हु हम खाइले में बहुत विकास डेवलपमेंट सकूछु हमें हमें विश्व गुरु हो ये नॉनसेंस एग्रीमेंट में साइन करी अफसो जाना कोयला थोड़ी हमें होटल में ना जीवे जीतो हमें बड़ी को ग्लास को कन्फर्मेशन है या हमें व्यक्ति जंगल फंगल काटला बंद कर दी हमें 2040 में कहछि ना हम तक मानी हो पेरिस में साइन करके 2015 में हमें कोन कहछु ना हमें 2070 पर्यंत देखि 2070 में देखला हम हमें कोन कहछु ना ओडिशा छत्तीसगढ़ झारखंड जोड़ी आइलैंड अछि जोड़ी बक्साइट अछि जोड़ी कोल अछि आराम से कर ता पे हर होम हर वर्ल्ड मार्केट हम भाई केति दरकार डिसाइड कर केति की सारिया उचित केति की सारिया नाही फॉर फ्यूचर जनरेशंस दैट इज द जनरेशनल इक्विटी एंड जस्टिस तो हमें चिंता करना पड़ो ओडिशा पश्चिम ओडिशा दक्षिण ओडिशा बक्साइट अछि जोड बक्साइट अछि सेठी पानी अछि दैट इज बलास मेटा प्रकृति केवल केनी बक्साइट आलुमिनियम क्वालिटी चक्चर करबा सिल्वर सिटी तैयारी करबा छ थाकिया रोड तैयारी करबा एवं जो रोड जीवो जंगल भितरे आदिवासी को साइकेल जीवा पे रास्ता नहीं तब साइकेल जीवा दरकार किंतु हमें 6 थाकिया रास्ता को चुका पे पर हो ना से थीबा जो जिनिस अछि से जो जंगल अछि ता तळे जो अछि खणे ताको हमें वर्ल्ड मार्केट को विकास नारे तो से कुछ हमें केते तो हमें तेरा जो के पानी अछि से पानी अछि नदी अछि मोर प्रश्न आज हम क्लाइमेट जस्टिस को थलो जब जेते की बड़े यही विकास नारे में पड़ी थी से राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो को दल भी हो
ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ कम से कम academicians, researchers, those who believe in this, कम से कम we accept it. Science. Then say this to आमे कहू कि जे तमे सब कलाबाई प्रश्न ना दासित रुकुंद्र जीविका अछि दासित रुकुंद्र जीवन धारण जो अधिकार अछि से खत्म हो जाଉଛି तेणु से दृष्टि पूरा पे करियो हाउ टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट जस्टिस द नेचर एवं नहीं तीन कथा के साथ केवल चुंबक 1884 मसीहा मार्च 11 पृथ्वी जो समानता साम्यवाद कथा आज भी चर्चित पृथ्वी के हिस्से फादर